Assalamu alaikum. General Science Class 8 KPK Books Unit number 4 Exercise यूनिट नंबर 1, 2 और 3 आसान तफसील उर्दू तर्जुमे और एक्सरसाइज के साथ हम पिछले वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। आज है यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट अ डिजीज इज। करेक्ट आंसर है सी नंबर, वैक्सीनेशन। MCQ number 2, if a nitrogen fixing gene from cyanobacteria is successfully inserted in plant root cells, correct answer है B number, plant's roots will fix nitrogen. MCQ number 3 है, a genetically modified rice variety with more iron content will help to treat, correct answer है A number, anemia. MCQ number 4, deficiency of insulin in human causes, correct answer है A number, diabetes. Number 5, which of the following can be used as a biofuel? Correct answer C number, methane. Question number 6, which of the following is not a product of biotechnology? Correct answer A number है polythene. Question number 7, baking process uses enzymes from, correct answer D number है yeast. Question number 8, a gene from one organism can be inserted into other one by one. Correct answer है C number, genetic engineering. MCQ number 9, what could be the advantages of using microorganisms like bacteria to get useful products by genetic engineering? Correct answer A number है bacteria grow and very fast rate. MCQ number 10, the best solution is hereditary diseases is, करेक्ट आंसर है डी नंबर, जीन थेरेपी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स प्रोड्यूस डाइज और सिंथेटिक डाइज? इसका आंसर है माइक्रोबल डाइज हैव मेनी एडवांटेजेस ओवर सिंथेटिक डाइज. Number 1, microbial dyes are biodegradable, non-toxic and non-allergic, making them generally better for the environment and for use around human. 2, microbial dyes don't have any carcinogenic components. 3, microbial dyes are obtained from renewable sources that can be harnessed without imposing harm to the environment. Short question number 2, give the advantages of using biodegradable plastic. Answer, the advantages of using biodegradable plastic are given below. Number 1, it has less carbon emission. 2, it takes less energy consumption to manufacture. 3, it decreases the waste sent to landfills or incinerators. Or number 4, it releases fewer harmful substances when breakdown. Short question number 3 है, what is the significance of fermented food? Answer है the significance of fermented food are given below. Number 1, they provide and preserve vast quantities of nutritious food in a wide diversity of flavors, aromas and texture which enrich the human diet. Most fermented food contributes bacteria that have a potential probiotic effect. This means that these bacteria may help restore the balance of bacteria in your gut, support digestive health and alleviate any digestive issue. Short question number 4 है, how biotechnology can transform the way of treating diseases? Answer, biotechnology can transform the way of treating diseases by number 1, diagnosis of diseases in short time. Number 2, development of appropriate medicine. Number 3, more accurate method of determining correct drug dosages. Number 4, improvement in the drug discovery. Number 5, better vaccine. Number 6, gene therapy.
Short question number 5. What could be the best solution to mineral deficiency diseases in the third world countries? इसका आंसर है the best solution to mineral deficiency diseases in the third world countries is to adding nutrients directly to soil with selective breeding or biotechnology. It is less costly method for reducing deficiencies and diseases. इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ रूल करूंगा। अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग टू सॉल्व इश्यूज ऑफ फूड शॉर्टेज। इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ आगे सफ़ा फिर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस यहाँ जिक्र किया गया है तफसील के साथ। सबसे पहले एग्रीकल्चर है, इसके बाद वाला सफ़ा जो है ये है। इसके बाद बुक के आखिर में जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है उसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर जो है यहाँ से इसका आंसर 3 स्टेप्स में दिया गया है। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई मशरूम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिक ब्रेक डाउन। स्टेप 2 preparation of clones of genes that are responsible for plastic breakdown। और स्टेप 3 है इंसर्शन ऑफ मशरूम विच कैन ग्रो इन वाटर बॉडीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में फिर मजीद क्वेश्चन है और इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट टाइप ऑफ जीन हैज़ बीन इंसर्टेड इन दिस कार्न। आंसर है जीन दैट रेजिस्ट अगेंस्ट इंसेक्ट्स हैज़ बीन इंसर्टेड इन दिस कार्न। बी क्वेश्चन है व्हाई द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हैज़ डिक्रीज्ड प्रोग्रेसिवली। आंसर है ड्यू टू जीन इंसर्शन which resists insect, the use of insecticides has decreased progressively। क्वेश्चन नंबर सी है why farmers preferred genetically modified corn over normal varieties। आंसर है farmers preferred genetically modified corn over normal varieties because GMO variety produces more yield। क्वेश्चन नंबर डी है गिव्स द एनवायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ दिस कार्न। इसका आंसर है द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ दिस कार्न इज इट रिड्यूसेस वाटर एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें फिर मज़ीद क्वेश्चंस है, इसके भी जवाब दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई काउपॉक्स मटेरियल प्रोवाइडेड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। आंसर है काउपॉक्स मटेरियल कंटेन्स इनएक्टिव जर्म्स दैट वर्क लाइक अ वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर बी व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्मॉल पॉक्स। आंसर है इन 1980 द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड। क्वेश्चन नंबर सी है वाई वैक्सीन्स आर कंसिडर्ड बेटर सोल्यूशन अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज। फिर ये इसका आंसर है
ये लॉन्ग है जो ज़्यादा टाइम लेता है, इसी वजह से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं पढ़ूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, नेम डिजीज़ अगेंस्ट विच यू हैव बीन वैक्सीनेटेड, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर है। फिर बुक में जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं वो एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये एक्टिविटी नंबर 4.1 है। ये एक्टिविटी के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी यहाँ जवाबात के साथ मौजूद है। और फिर यहाँ पर यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी के एक्सरसाइज का अख्तिताम हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को अपने साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।